वेलकम टू फाउंडर्स ड्राइव विद आयुष एंड मयंक। आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं अनुज अग्रवाल, जो कि एक सीरियल एंटरप्रेन्योर और एक फिलैंथ्रोपिस्ट, एक एनवायरमेंटलिस्ट। एंड सर, इसकी शुरुआत कैसे हुई? कहाँ से आपने फर्स्ट जर्नी, फर्स्ट जो स्टार्टअप था, कैसे शुरू किया, कैसे आप बिजनेस में आए एंड क्या पर्पस था? हम तीनों अम्बाला से हैं जी। और तीनों एक ही स्कूल से, डीएवी स्कूल से। ओके, नाइस। तो जब एक एग्ज़ाम होता था हमारे बचपन में, NTSCE बोलते थे उसको, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। तो मेरे ब्रदर ने क्लियर किया, तो वहाँ से उसको था कि भाई कुछ बिजनेस करना है शुरू। तो उसने फिर मॉक अम्बाला टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ NTSC तो वो हमने अम्बाला में कराया। 5-6 स्कूल्स के अंदर 10-10 रुपए बच्चों से कलेक्ट करके, उनको क्वेश्चन पेपर आंसर शीट देके, उसकी चेकिंग करके हर बच्चे को सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन और प्राइजेस निकाल के दिए। सो दैट वाज द स्टार्ट ऑफ द जर्नी। ओके। एंड फिर उसके बाद मॉक CET कराया जब ब्रदर का इंजीनियरिंग क्लियर हुआ। फिर मॉक कैट कराया जब उसका MBA IIM में क्लियर हुआ। बीच में हमने मिस हरियाणा कॉन्टेस्ट कराया कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ऐसे करते करते फिर हमने मारुति के लिए काफ़ी इवेंट्स किए। तो फिर लगा कि भाई इवेंट्स जो है, हर रोज़ कुआं खोदो हर रोज़ पानी पियो वाला स्टोरी है। कुछ सस्टेनेबल बिजनेस करना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन की अम्बाला के अंदर ही FMCG कंपनीज की। तो फाइनली फिर 2005 में टेक्नोलॉजी कंपनी शुरू की। तो ये 2005 से पहले का कितने साल का आपका वो रहा? ये ऑलमोस्ट 11 इयर्स का रहा। साथ साथ ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन चल रही थी। तो 2001 तक पोस्ट ग्रेजुएशन चली। 2001 से फुल टाइम बिजनेस किया, डिस्ट्रीब्यूशन वाला और कंसल्टिंग वाला और रिसर्च वाला। और 2005 में फाइनली IT कंपनी स्टार्ट की। एंड इसको IT कंपनी में आने का मतलब बेसिक रीज़न क्या था? आप पैसा तो और भी तरीक़ों से कमा रहे थे, Right. IT पर्पस की क्यों, मतलब IT क्यों? IT इसलिए कि मेरे ब्रदर ने एक IT कंपनी में ज्वाइन किया था 99 के अंदर। तो वो 2005 तक उसी में थे और he rose to the level of CEO over there. So he had seen, felt, experienced everything. So it was easy for us to start with, and so that was the reason of getting into IT. तो एक सर आपके अभी जो NTSC और आपकी जो कंपनी पेरेंट कंपनी का नाम है ऑल्ट्रुइस्ट, राइट? तो एक आपने लिंक्डइन पे पोस्ट किया था कुछ, जिसमें आपने बहुत पुराना वही शायद सर्टिफिकेट शेयर किया हुआ है आपके ब्रदर फर्स्ट नहीं, वो मेरे ब्रदर का नहीं, हमने जो दिया था जब हमने दिया था। तो वो एक यहीं पर है, अम्बाला से ही है, निखिल करके। उनका बिजनेस है होटल्स में लिनन सप्लाई का। तो हमारे होटल्स हैं अब 14-15 के करीब। तो उनसे नेगोशिएशन के लिए बुलाया। तो वो कहते कि एक ऑल्ट्रिस्ट में 94 में देखी थी जिन्होंने एक पेपर कराया था, और एक ऑल्ट्रिस्ट अब देखी है। तो मैंने उनको कहा वो सर्टिफिकेट दिखाओ, तो उन्होंने वो शेयर किया। तो मैंने कहा ये वही ऑल्ट्रिस्ट है। Amazing. अच्छा, so that was the same Altruist. Okay. Okay, it was your company only. Okay. So when we started only, we kept the name Altruist. Yes. Initially it was the Altruist. Then it became Altruist Technologies Private Limited. Okay. तो सर इस पे भी हम आएंगे कि ऑल्ट्रुइस्ट नेम और आगे भी जो है आपकी टैगलाइन है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, राइट? तो ये कैसे और क्या आपका पर्सपेक्टिव रहता है जब आप किसी बिजनेस मेंटर होते हैं, बिकॉज you have been entering into different areas, right? IT, telecom, media, logistics, analytics, BPO. Yes, and also co-hosted if I'm not wrong. Co-living, yes. So इतने सारे areas में आप enter करते हैं, so we would love to know कि आप क्या देखते हो? So what is your intent before you enter into a particular area? और उससे पहले if you want to like continue on something or ask something on what he was saying, तो please feel free. Yeah. सर, जैसे ITs की शुरुआत हुई 2005 में, उसके बाद जो है आप अभी तक लग 20 साल हो चुके हैं अराउंड, आप IT में ग्रो करते जा रहे हैं डिफरेंट आई वुड से टेक्नोलॉजीज़ के अंदर, डिफरेंट फील्ड्स के अंदर।
अब इसमें आप बात करेंगे मोबाइल सर्विसेज, वेब सर्विसेज, आपने इस तरह की चीज़ें भी करी, ठीक है। देन मोबाइल से लिंक्ड आपने टेलीकॉम में घुसे, टेलीकॉम से जो है एडवर्टाइजिंग के अंदर घुसे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो आप रास्ता खोजते गए और करते चले गए, इसके पीछे का मोटिवेशन क्या था? लाइक पैसा तो आप कमा ही चुके थे, यू कुड हैव रिलैक्स एंड लाइक लेट इजीली लाइफ, तो आपने क्यों एक के बाद एक स्टार्टअप डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स में किया? पर्पस क्या था? तो पर्पस तो एक ही होता है हर आदमी का कुछ भी शुरू करने का, टू कीप हिमसेल्फ बिजी, है ना। तो हमारा क्या था कि एक बिजनेस शुरू किया तो एक अच्छा टीम मेंबर मिल गया जिसने कहा कि मैं ये संभाल रहा हूँ, तो हम फ्री हो गए। तो फिर अब कुछ और काम ढूंढना था, हमने दूसरा ढूंढा, उसका कोई मिल गया, उसने संभाल लिया, तो हम फिर फ्री हो गए। So Okay. money was not your primary motivation. नहीं, money- It was to keep yourself busy. हाँ, but yes, money is the deciding factor कि whether what we are getting into will make sense for money or not. Because if you are not making money in anything, you will not be able to sustain it. Right. Until unless it is completely philanthropic. Yes. वो आप अलग से करें. वो अलग से से करते हैं, उसके अंदर अलग मोटिवेशन होती है, अलग वो होता है। बट अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, इट हैज टू बी सेल्फ सस्टेनेबल, growing, because businesses which do not grow come to an end one day, so it has to have a growth factor in it. एंड अभी जैसे जितनी भी मैंने कंपनीज आपकी ऑब्जर्व करी, रिसर्च किया, उसमें मल्टीपल डायरेक्टर्स हैं। हाउ डू यू, आई वुड से, यू नो, गो टुगेदर? बिकॉज जब भी 2 लोग काम करते हैं, 3 लोग काम करते हैं, देयर इज ऑलवेज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट्स, हर किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। एक ओवरऑल साथ कैसे आगे बढ़ते हैं? देखिए, देखो जितने भी डायरेक्टर्स आपने वहाँ दिखे हैं, वो ऐसा नहीं है कि डे 1 पे when he joined we appointed them or they came on as a director only. Okay. The person who has worked with us along with us for 5-10 years has got into that role. Okay. So जब With time they With have time. gone through the ladder. right. ओके, तो सर एक चीज़ जो मेरे माइंड में आती है, तो जैसे आप अपना जिस तरीके से बता रहे हैं बिजनेसेस का, और जैसे आप ऑपरेट करते हो, इंटेंट जैसा आपका रहता है कुछ भी काम को लेके, और आपने वो बोला भी टू कीप योरसेल्फ बिजी। सो जैसे हम डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स को देखते हैं, राइट? सो सम पीपल डू इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी, कि बहुत पैसे कमाने हैं, करोड़पति बनना है, दैट इज देयर इंटेंट। कुछ का होता है कि फेमस होना है, कि ठीक है मनी आ रहा है, बट आई वांट टू यू नो सॉर्ट ऑफ गेट फीचर्ड इन मोर इंटरव्यूज, इकोनॉमिक टाइम्स में मेरे इंटरव्यू आए, फ्रंट पेज पे मैं हूँ, ऐसा कुछ। कईयों को होता है कि मुझे यूनिकॉर्न बनाना है। तो आपके लिए पर्सनली एज अनुज अग्रवाल, सो यू नो व्हाट ड्राइव्स योर हार्ट, एंड इफ मनी इज नॉट द इफ इट इज नॉट द डोमिनेटिंग फैक्टर इवन सिंस द स्टार्ट, तो उसका रीजन क्या है? वर यू फ्रॉम अ कंफर्टेबल फैमिली इन विच यू ग्रू अप इन, और योर माइंड वर्क्स इन अ डिफरेंट वे, कि आप कुछ अच्छा करना चाह रहे हो और यू वांट टू क्रिएट एन इम्पैक्ट? लाइक आई डोंट वांट टू लीड यू इनटू अ आंसर, तो जो भी आपका जो उसके लिए माइंड या थॉट प्रोसेस रहता है, प्लीज वो शेयर कीजिए। So, no, I think the biggest thing which has worked for us in this growth story has been that we were and we are 2 brothers. So yeah, so if one starts feeling relaxed, the other pushes him to let's do something, let's do this, right? If somebody becomes conservative, that and which is generally me who becomes conservative, okay, let's enough. Then So, sorry, who is the elder one? he is the elder one. He is the elder one. He's 3 years elder. So because what happens, because we are 2 brothers, one becomes free from the business, he gets a lot of bandwidth generated because the other is taking it. So then in his spare time he starts flirting around for more deals, for more acquisition. Okay. So that's how we keep pushing each other, right? So if you try to jog for 5 kilometers alone, you will not be able to. But when there is somebody, when he makes early start, then you push yourself to come close to him, and then sometimes you come in forward, right? Then he will push himself. So that has been going all well. So 2 तरह के भाई होते हैं दुनिया के अंदर। एक होता है कि कहता है कि ये 9 बजे उठता है
तो कल से मैं 9:30 उठूंगा, है ना। वो कहता है अच्छा ये 9:30 उठ रहा है तो अब मैं कल से 10 बजे उठूंगा। ये 1 बजे दुकान जाता है, मैं 2 बजे दुकान जाऊंगा। ये 2 घंटे लंच करता है, मैं 3 घंटे लंच करूंगा, है ना। और दूसरी तरह के भाई होते हैं, वो कहते हैं भाई ये 9:30 जाता है तो मैं 9 जाऊंगा। वो फिर कहता है वो 9 जाने लग गया, मैं 8:30 जाऊंगा। और हाँ, तो हेल्दी कंपटीशन, पॉजिटिव डायरेक्शन में वो जा रहे हैं। सो ऐसा नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा इस तरह के हैं कि भाई उससे ज़्यादा करना, हमारा आपस में कोई कंपटीशन नहीं है, बिकॉज हम दोनों बहुत कॉम्प्लीमेंट्री हैं टू ईच अदर। वी हैव आवर ओन skill set and different style of workings and different, so which is good also. So but ठीक है, each one or the other keeps pulling each other to work more. Awesome. Perfect. Awesome, yeah. So this sounds like more like a story of one brotherhood. Actually, it is about two brothers. अगर आपकी जैसे एक मूवी बननी होती, so this could be one perspective. It could be made from, right? कि दो भाई हैं जो बचपन से साथ हैं, सिर्फ बड़े तो वो ही हैं लेकिन वो काम भी साथ में कर रहे हैं, और कैसे वो चीज ग्रो हुई, वो स्टोरी बड़ी हुई। No, it's a beautiful story. I'm not getting time to make a movie on it, but it's really worth making a movie. And, watching our podcast. If anybody would So what happened, like when I was doing my own businesses. So from 2001 when I post graduated and my brother was in job. So till 2005 I was doing my business. Of FMCG distribution, consulting, research, market research and all. Then 2005 he resigned from his job and we started this technology company. So we were sharing office space. I was sitting in one room. It was first floor of our house where we had started this business. So they were employees. He had a lot of employees. I had 4-5. He had 34 employees at that time. So it was going good. So one day he comes to me and says, "Okay, how much do you earn?" So I calculated. I said I earn 2 lakh a month from my business. Okay. So he says. And this was which year? Sorry. 2005. 2005. Okay. So immediately 2-3 months after he started. So he says, 2 lakh, I'm ready to pay to an employee. Why don't you join me? So I said, okay, I'm already there with you. All your finance, HR, invoicing, collection, logistics, is being already handled by me. It is just that sales and tech that you have to take care of. Rest all I am already taking it. So what's the point? Like, he says, nahi, aise nahi. I want somebody full time along with me. I said, you go and hire. Right? He says, nahi, if I will hire somebody, he will. If I will say do this, let's do this, he will say okay, sir. If I say let's do that, he will say okay, sir. I need somebody who can have debate with me. जो मेरे साथ बहस कर सके। मैं कहा वो तो हम करते ही रहते हैं, अभी भी कर ही रहे हैं। What's new in it? तू बता दे, अगर बहस करनी है बहस कर लेंगे। तो वो कहता नहीं ऐसे नहीं, तू छोड़ दे ये वाला और मेरे साथ आ जा। मैं कहा नहीं मैं पहले ही बहुत बिजनेसेस चेंज कर चुका हूँ। मैंने पहले अम्बाला में किया था, फिर देन आई शिफ्टेड टू जीरकपुर। तो मैंने कहा अब मैं चेंज बंद नहीं करूँगा। ओके। So then after 10 days we again sat. So he said कि मैंने एक एक्सेल शीट बनाई है, उसमें कुछ कैलकुलेशंस की हैं। तो उसमें मैंने देखा है कि मैं अपना बिजनेस बंद कर देता हूँ। So the IT business. Okay. I said कि क्या हो गया? कहता मैंने देखा कि अगर हम दोनों मिलके तेरे वाला काम करें, FMCG डिस्ट्रीब्यूशन, कंसल्टिंग वाला, तो हम 10 लाख रुपए महीना कमाएंगे। Oh, so he did the numbers basically. Okay. Calculate किया। So अगर हम दोनों मिलके IT वाला करें तो 1 करोड़ रुपए महीना कमाएंगे। ओके। ओके। तो पर हमारी लाइफ में कोई फर्क नहीं आना, 10 लाख महीना हो या 1 करोड़। हम तब भी एक कनाल की कोठी में रहते थे, हम तब भी मर्सिडीज चलाते थे। अच्छा। तो हमने इससे बड़ी घर में नहीं जाना, इससे बड़ी कार नहीं चलानी। तो फिर क्या फर्क है 10 लाख में 1 करोड़ में? पर काम इकट्ठे करना है। Okay. So if you are not ready to shut your business, I will shut mine, but we will work together.
So this is like a tag team and this is fighting like first hell. time I'm hearing such kind of a story. Yes. Like literally, मैंने कभी किसी से नहीं सुना ऐसा कि हम And- ज्यादा पैसे कमाने वाला बिजनेस कम बंद कर देते हैं, हाँ। कम वाले में, लेकिन काम तेरे साथ ही करूंगा, ऐसा मैंने कभी नहीं सुना, ना भाइयों में ना किसी और किसी और में. ऐसे कहीं भी So नहीं. this is sheer love. No, it's Affection. not. You can say that. It is that. But I would say he's very diplomatic. He knew what will happen. कि what will end up happening. So he has always won in bluff. So Yeah. this time also it worked for him. Okay. आपको कैसे मनाने होगा? सबको, not even only me, right? My parents, everyone. He can. Yeah. So that's the reason he said कि ये बोलूंगा तो ये मान ही जाएगा कि यार काय को खराब करना है कर लेते हैं. But the good thing was कि he didn't offer me कि okay I'll pay you 5 lakhs a month. He Yes. didn't say I'll pay you 10 lakhs a month. Okay. He didn't say okay I'll give you 20% in companies, 50%. I still own 100% of the company. Oh my God. Okay. So this is, I think, यहाँ sheer love आ गया. So how he says that when somebody asks him how much do you love your younger brother, he says I don't know about love. I know about confidence I have in him. Okay. Right? How much trust I can do on him. So that's the reason I own 100%. Wow. Amazing. Amazing, actually amazing. This is a story I think हमारे viewers के लिए एक inspiring story बन सकती है, where two brothers or two friends can work together for a longer cause and इतना trust और confidence एक दूसरे पे रख के भरोसे पे चलते हैं, and it's really amazing. I mean, और जैसे आपने मूवी का बोला तो लाइक ये तो मेरी पर्सनल ओपिनियन है और लाइक पर्सनल अपील है कि ऐसे सब्जेक्ट पे और ऐसे रियल स्टोरी पे तो डेफिनेटली मूवी बननी चाहिए, because this kind of a message going out into the society, what an elder brother can do for a younger brother, and he wants to work with him, and the way younger brother takes those businesses to heights and everything, it's like really good message, good moral, and yeah, good, and also very good leadership on your elder Yes. brothers. Yeah. Yes. लोगों को मनाना that is amazing. Mm. Yes, it's a skill set to be learned जो हर किसी को सीखना चाहिए. सर एक हमने जब थोड़ा सा रिसर्च किया तो हमें पता लगा you like started a campaign like I hate I polythene. hate polythene. Yes. What exactly is that? वो कहाँ से शुरू हुआ, क्या रीजन था? क्योंकि बाकी और भी चीजें हैं, प्रॉब्लम्स हैं एनवायरनमेंट के अंदर, बट पॉलिथीन ही क्यों? So I personally was practicing this no polythene thing in my life, right? So like we stay in a tower, so if we are coming out and going to the market, and my wife says, "Oh, we have to buy that thing," so I would say, "Okay, are you carrying a bag?" She would say no. Then we will go back home, take a bag, and come back to market and buy it. So that we were practicing, but never thought of spreading this word out. But then last year, 22nd March, which was a Hindu Nav Varsh, my wife attended a program by Bharat Vikas Parishad. So she got motivated because I've been pushing her to start something philanthropic and charitable or something social cause, some social service. So after that, watching that program of New Year, she was motivated and she said, "Now I'm ready because our kids have grown up and all." So she said, "I have time. I will start doing something." So I asked, "What do you want to do?" So she says, "I like this thing of anti-polythene." This thing, it's a very disturbing element in society because each polythene stays there for 400 years on earth, spoiling the soil quality, water, and entering into the food chain because our cows eat those polythene and that gets stuck in their stomach and all. So she said, "I want to pick this up." So we started and within 10-15 days, we were able to make our society polythene free. I stay in a big society, 1113 flats in that society, and we have 10 shops in that. And we were able to, because people who are very good of that society, they joined hands, their kids started coming to our stall, they stood there, convinced everyone. Everyone picked 10 bags, 12 bags, right? We hanged some bags under every tower.
So if you forgot your bag upstairs, you can take from reception of the tower and return there. Okay. So Okay. we did all this. We provided paper bags from newspaper to the shopkeepers for vegetables and all. Okay. So within 10-15 days, we were jobless because we were able to Yeah. make our society polythene free. Good way of being jobless. Good Yeah. achievement in 10 to 15 So years. then when people also added, made a WhatsApp group, people were very excited. Yes, well done, all that. So we took bigger challenge of making our sector polythene free, which is sector 20, which has a lot of societies, a lot of people staying there, big market. So people started moving, our team started moving to each and every society, convincing residents of there to not to bring in polythene, gave them bags to hang at their reception, gave all those concepts. They also joined hands. So कारवां बनता गया. जी. तो सेक्टर 20 हो गया, फिर पूरा पंचकुला. Then we took up Ambala city, Ambala Cant, Yamunanagar, Karnal, Patiala, wherever people started approaching. So once DC Mansa called us, okay, we want you to come here and explain what you are doing in Panchkula because we have heard that you are doing very good. So we went and gave a presentation, gave them the best practices, what we do. So yeah, we are able to reduce 2 tons of polythene every day basis. It's a huge number. Yes. 2 tons of plastic, I would say, it's a very huge number. And I would say कि कितना माइक्रो प्लास्टिक आपने हटाया है जो हमारे फूड चेन के अंदर आता है इन सम वे, वो बहुत लोगों की जान बचाई है भाई. आई थिंक दिस इज अ वेरी नोबल कॉज. Animals, people, Yes. environment. Yes. जो आपकी वाइफ एंड आपने मिलके इसको चलाया, रियली अप्रिशिएट दैट. Thanks. And And just, sorry, go. and we recommend our viewers to I would say avoid polythene at any cost. आपको कुछ भी लगता है कि हम आपकी हेल्प कर सकते हैं इसको रिमूव करने के लिए आपके सिटी में, you can contact us and we can help you out with the ways we do in with the Altruist team and Anuj team. Anuj sir. One thing I wanted to add कि just like all good things, so this also started at home. Yeah. पहले आपने घर से शुरू किया. Charity begins at home. Yes. Charity begins begins at home. फिर वहां से आपने उसी अच्छे काम को अपनी सोसाइटी में किया, फिर सेक्टर, तो वही ऑर्गेनिकली स्टेप बाय स्टेप आप बड़ा बनते करते कैसे. तो सर अब आगे इंडिया लेवल पे कैसे लेके जाना है इस आई हेट पॉलिथीन को, क्या विजन है आपका? So, what we have learned, as Mayank just said, that you start doing something good at small level, it will automatically grow, and so people have started approaching us from other locations also. I want to start here, I want to start there. So it will happen. We just have to perfect the model in small area so that it can be replicated. So that's what is going on with North India. We have lined up some distributors pan India as well, but that is pure, you can say, trading activity. Once that gets to a level, then we will add this social angle to it. We'll ask volunteers of those cities to join hands, because first you have to get the availability done. So there's a replacement of polythene by a biodegradable material which is made out of starch from maize, corn seeds. So that we are promoting and spreading through our volunteers. So that's what we are doing. Hopefully, it will be. So the only thing required in this is a bit of strictness from government on consumers, not only on retailers who are selling this. If they start chalaning people who are carrying polythene bags, like what is happening in Himachal Pradesh, what is happening in Madhya Pradesh, if that starts happening in other states, this will automatically die, this polythene curse, I would say. Yeah, some places do it for plastic bottles as well. Yes. इट्स एन अमेजिंग आइडिया सर. आई थिंक गवर्नमेंट में कोई तो सुन रहा होगा हमें, एंड वो लोग शायद अपने पार्लियामेंट सेशंस के अंदर मे बी इस टॉपिक को उठाएं. It's already banned. Polythene is banned pan India. Pan-India. It is just the implementation part. Like the way moment you enter Chandigarh, you will pull your seat belt. Yes. Right?
Yes, it's all about चलाने. Traffic rules are strict there. Right. Yes, you know that नहीं डाला तो चलान हो हाँ. जाएगा. From day Red one. light, low beam पे high beam पे हाँ. है तो चलान हो जाएगा. So मतलब from day one people have been telling us कि आपसे कुछ नहीं होगा, आपसे कुछ नहीं होगा, जब तक सरकार चालान नहीं करेगी, सरकार चालान नहीं करेगी. तो हम लोगों को यही कह रहे हैं कि भाई सरकार करेगी. जब हम सरकार को करके दिखाएंगे कि इसके बिना रह सकते हैं, कर सकते हैं, Alternatives हैं and practical हैं, Practical. तो वो हो सकता है. तो हमारा सिर्फ इतना ही है कि सोती सरकार को जगाना है और तो कुछ नहीं. And consumers will also take to it जब उन्हें लगे कि हाँ हमें बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं देने पड़ते, हाँ. फिर भी viable alternative मिल जाते हमने हैं. बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव दिया हुआ है पंचकुला के अंदर. हम हर शॉप के ऊपर 10 रुपए का एक कपड़े का थैला रखते हैं जो कि कस्टमर ले जा सकता है ऑन रिटर्नेबल बेसिस. आप 10 रुपीज दो, बैग ले जाओ, वापस दे दो बैग, 10 रुपए ले लो. चाहे वो गंदा हो गया है, चाहे वो फट गया है, जैसा मर्जी बैग है. So we have been able to spread 50,000 such bags in Panchkula. Okay. Yeah, it's good. Otherwise, like in 10 rupees, they are buying a bag. If they don't return Yes. it. And they can keep using it. Yeah, Yes. yeah. And that bag is worth much more. Yes. So but you are giving it in 10 rupees. Okay. Yeah. Amazing. This can actually make a difference, I think. तो एक सवाल और आता है सर कि so other than being an entrepreneur and doing all this philanthropic slash environmental activities, what other hats do you wear, if at all? Like, are you an angel investor, or do you do mentoring, mentorship, or are you somebody who spends most of his time with family? Are you family man? तो ये जो आपने चीजें बताई, उसके अलावा अनुज अग्रवाल, what all hats does he wear and what all does he do? There's a lot of hats. Every moment, I think, and keep changing hats only. That's so like family is right. One this thing. So and then playing every day, 1.5 hour goes into playing squash. Squash. Okay. In your society. In our society only. So before that, before shifting to this society, I was playing badminton very regularly. And now migrated to this. So and we actually saw table tennis and table as well. So that's there, and then a lot of social events, gatherings, going to music shows. From childhood, I've seen all artists like Daler Mehndi, Nusrat. Nusrat I've seen for 3-4 times live. Jagjit Singh must be 6 times. Oh, awesome. Ghulam Ali ji, all. Wow. Malkeet Singh, Bale Sagu, I think at that time, every day, every evening was going into such shows. Now also, wherever possible, I try to go. Lot of family functions. So all those things are there. Yeah. Okay, so sports enthusiast, music lover, and a family man. Yes. Dancing has been a passion for day one childhood. Dancing. So since we come from the same school, in the assembly time, when there was some big speaker expected and he is getting late, so I used to be the time filler. They used to call me, okay, till the time the celebrity comes, he will dance like a local artist. Wow. And do you still do it? Yeah. और कहीं आप अपना कुछ वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करके फिर डालते हो ऐसा, या very rare privately. So because people make videos while dance, so they share. They will do it. They share in groups and all that. Okay. Very nice. सर आगे क्या, मतलब इतना कुछ अचीव कर लिया, इसके आगे क्या करना बचा है अभी? So जो अचीव कर लिया, ये भी कभी सोचा नहीं था, कभी प्लान नहीं किया था, आगे भी प्लान नहीं किया. तो टेक इट एज इट कम्स वाला है ना. तो अभी ये अंबाला के अंदर वापसी हुई है हमारी. So with the mall. Okay. So this is like one project which you have done after many years. In Ambala. In Ambala, yes. After 1998, we shifted to Chandigarh from Ambala. So we had lost touch, but we were very regular coming on weekends because we have got a lot of relatives there. So
but 2022 end we acquired this mall that has brought us back to this. Okay. So the beautiful story around this is what I generally narrate to my team members. So एक पंडित जी थे, पुजारी जी, बहुत पहुंचे हुए संत थे वो। तो वो एक बार गंगा में नहा रहे थे, तो वो आरती कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, ऐसे करके पानी सूरज को चढ़ा रहे थे। ऊपर से एक चील जा रही थी, उसके पंजे में एक छोटी सी मरी हुई चूहिया का बच्ची थी। तो वो उससे छूट गई और वो स्वामी जी के हाथ में आ गई। तो स्वामी जी को लगा कि भगवान ने भेजा है, और स्वामी जी के कोई बच्चे भी नहीं थे, तो उन्होंने उसको मंत्र फूंक के उसके अंदर जान डाल दी और उसको लड़की बना दिया। तो अपनी वाइफ को दिया कि भाई ये भगवान ने हमें बच्ची दी है, अब हमें इसका पालन पोषण करना है। तो उन्होंने उसका पालन पोषण किया, बड़ी हो गई। अब उनकी वाइफ ने उसको कहा कि भाई अब इसकी शादी का सोचो। कोई बात नहीं, मेरी डॉटर है, तो इस जो भी दुनिया में सबसे शक्तिशाली है उसके साथ में इसकी शादी करो। वो कहते थे ठीक है। तो कौन है सोचते थे, तो उन्हें लगा भी सन जो है सबसे शक्तिशाली है। तो वो सन के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई हमारी बेटी है, तो आप उसके साथ शादी कर लो, तो देखते हैं। ठीक है जी। तो वो सन पूछता है कि आपने मेरे को क्यों चूज किया? तो उन्होंने कहा कि आप सबसे शक्तिशाली हैं, इसलिए हमने आपको चूज किया। कहते यार मैं शादी तो करना चाहता हूँ आपकी डॉटर के साथ, पर मैं सबसे शक्तिशाली नहीं हूँ। कहते क्यों? क्या जब बादल मेरे आगे आ जाता है तो मैं तो दिखता भी नहीं हूँ, मेरा वजूद खत्म हो जाता है। कहते अच्छा। तो वो बादल के पास चले जाते हैं, तो वो बादल को बोलते हैं। बादल कहता है जी मैं शक्तिशाली नहीं हूँ सबसे ज्यादा, जब हवा चलती है तो मेरे को उड़ा के कहीं का कहीं ले जाती है। तो वो पवन देवता के पास जाते हैं, उसको बोलते हैं। पवन देवता कहते हैं जी मैं नहीं हूँ, पहाड़ मेरे आगे आ जाता है, मैं कुछ नहीं कर पाता, वापस मुड़ना पड़ता है मुझे। तो वो पहाड़ के पास जाता है। पहाड़ कहता है जी मैं भी नहीं हूँ। कह जी कौन है? कह जी एक चूहा, वो मेरे अंदर सुराख कर देता है और मैं उसका कुछ नहीं कर पाता। तो वो चूहे के पास जाते हैं, तो चूहा सारी स्टोरी सुनता है। वो कहता है कि यस मैं ही सबसे शक्तिशाली हूँ, मेरे से ज्यादा तो कोई है ही नहीं, मैं तैयार हूँ आपकी लड़की से शादी। तो शादी करा देते हैं। तो कहते हैं भाई, चूहा कहता है महाराज एक रिक्वेस्ट है कि ये लड़की मैं चूहा है ना, मैच नहीं बन रहा है, आप इसको वापस चूही बना दो। तो उसको चूही बना देते हैं। तो सारी दुनिया घूम फिर के वो चूही बन जाती है। ऐसे ही हमारा है, हम अम्बाला से निकले, 55 देशों में बिजनेस करके वापस अम्बाला आ गए। शुरू हुए तो coming back to the roots. Yes, and if you will not mind answering, sure. what made you at that time in 98, 99 shift your ways from Ambala to So Chandigarh? my brother picked up a job there. Okay, so that was the reason. That was the reason. Okay. So parents gave him a lot of offers that you should stay there. We have relatives there, right? Who will take good care of him. We can arrange a PG for him. But he said no. I have to have dinner with you. Okay. Right. So I will come back every day. I will go every day. And he used to come at 2 in the night. Okay. Right. So that was scary. Then parents agreed to shift to Chandigarh. Oh, otherwise उनका walk down चलते रहता। Oh, wow, awesome. And okay, and again we come back to your elder brother's love for the family, right? Every night I have to have dinner with him. And maybe this also he might have known कि अगर मैंने ऐसे बोला तो ये चुप Yeah. I'm telling you a very small aspect of it. To elaborate it, he would come back at 2 in the night. He will ask, okay, I want to have dinner. Then mummy will prepare dinner. Okay. Right? So and then he will narrate story के आज लालड़ू आके मेरे को नींद आ गई स्कूटर चलाते चलाते, मेरा स्कूटर नीचे उतर गया है ना, पर मैं फिर भी आ गया और मैं कल फिर आऊंगा, रोज फिर ऐसे ही तो नहीं अब शिफ्ट करते हैं हमारे पास सीखने के लिए बहुत कुछ है। Maybe if it is at all possible, एक podcast आपके बड़े भाई के साथ दोनों। Really amazing. So coming back to अम्बाला, अम्बाला वापस रिश्ता बन गया वापस आपका। अब अम्बाला में क्या आप कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे? लाइक अभी
उस टाइम पे आपके ब्रदर को अम्बाला से मूव करना पड़ा। आज आप उस पोजीशन में हैं कि आप अम्बाला को वापस कुछ दे सकते हैं, अम्बाला के लोगों को कुछ दे सकते हैं, तो क्या आपको लगता है कि क्या करना चाहिए? नहीं, देखो, एम्प्लॉयमेंट ही होता है एक शहर को ग्रो करने के लिए। इसी के लिए मेरे ब्रदर बाहर गए थे, तो वी हैव started and shifted our tech team from Panchkula to Ambala. Our entire finance for group, right, with 38 people in finance is based out of Ambala now. We have started a BPO here for Aadhaar of 250 people here. So a lot of employment opportunities we have been able to generate because of this coming back to Ambala, right? And so one thing I need this city should really do is, people are very negative about Ambala, right? So that is a very painful aspect about it. At least people should not talk negative about it. People should talk positive, right? And that will happen with time. So this negativity which is coming, one, I would like you to elaborate a little bit more on this. That what is that negativity that you hear? And second is कि ये अम्बाला के अपने रेसिडेंट से आती है, बाहर वालों से? No, बाहर से किसी से नहीं आती, सिर्फ रेजिडेंट से आती है. What has happened is people who have grown have gone out. So people feel कि अम्बाला में कुछ नहीं होता है, अम्बाला में कुछ नहीं होता है, बाहर जाके सब हो जाता है ना. So that mindset needs to change. Yes, right? Absolutely. One good thing about Ambala and bad thing about the same thing is bad thing for Ambala is its proximity to Chandigarh. Yes. Right. So which has helped us also, and which has gone against Ambala also, that people who have grown have moved up. So we need to work on this. People grow here only and stay here only after growing. Yes. So make more opportunities here. Right. So I think this can be a way, like there can be a way जिससे हम जो लोग अम्बाला के बाहर जाके जॉब इनको करना पड़ रहा है वो यहाँ पे भी कर सकते हैं. If we can set up small offices for big IT companies. Yeah, we have made one co-working space also here in this mall, so people can work, take 1 seat, 2 seat, 3 seats. Yes. So a lot of things are happening in Ambala. Good things are happening in Ambala. I think it will certainly grow. People will not be required to move out. And with the growth of IT, you don't have to move out of the city. Yes. You can do IT anywhere. So yes, that's the good part. And I feel we need one good IT park here because there are a lot of small IT companies. Yes. It not be a big IT park. It can be a small IT park with maybe floors or offices, small offices. It should do good in Ambala. And with coming airport over here, so I think वो भी एक airport अच्छा would also point help. है. Yes, it will make Ambala independent of Chandigarh. Yes. So even I can relate to all of this which is being said, right? तो मेरी भी जैसे जो स्टोरी रही है, तो मैं भी बाहर जाके पढ़ा हूँ. मेरी ग्रेजुएशन 12th तक अम्बाला में था, पर ग्रेजुएशन चंडीगढ़ में हुई, MBA चेन्नई से हुई. And then after that I worked in different cities. I worked in Pune, I worked in Rajasthan, Dubai था, फिर वापस आया, फिर पुणे गया, फिर अम्बाला, बैंगलोर भी रहा कुछ टाइम अपने भाई के साथ. So and now last 3 years I've been working on my own startup, which I work from Ambala also and from Bangalore also. तो I can relate to what you are saying कि हम लोग ऐसा सोचते हैं कि बाहर बेटर है, और है भी. मतलब उस टाइम पे बहुत कम था अम्बाला में, कुछ करने के लिए था भी नहीं इतना. और अब जैसे आप बोल रहे हो कि अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं. So I would add on 2 things like what you said, just building upon that. एक तो job opportunities होने चाहिए. दूसरा culturally, if we can make the city a little bit more happening, so that people don't feel that lack कि हमें enjoy करने के लिए, party करने के लिए, just to have a good time, not just necessarily clubbing party, but just to have a nice, peaceful, enjoyable time. तो कुछ अच्छे parks हों, कोई ऐसे hangout spots हों जहाँ youngsters जा सकें, और especially अगर IT आएगी, so those people would love to have these things. और plus IT कंपनीज के खुद के कैंपसेस बहुत ब्यूटीफुल होते हैं. Right. So that will I think help a lot. कैफेज की बात करें अगर, तो मुझे लगता है कैफे कल्चर अम्बाला में शायद अब बेटर हो रहा है. मुझे याद है हम जब 11th-12th में थे, एक CCD खुला था प्रेमनगर के पास, और वो फिर कुछ टाइम में बंद हो गया क्योंकि उनके पास कस्टमर्स नहीं आ रहे होंगे. नहीं, आई थिंक तब CCD का ही इशू हो गया था.
अच्छा. if you Yes, remember. yes, yes, है I ना? don't remember. I don't so know the issue CCD क्या went through a very bad phase. very bad हुआ. No, phase. that was very late, right? वो तो अभी कुछ ही साल पहले की बात है. When the founder basically took his own life, right? No. So why he took life? Because CCD was going Going very into debt. bad from last 5-6 5-6 years, right? तो मैं हाँ. बात कर रहा हूँ 2006 5-6 years before he died. Yes. So what we are talking about 10 years, 10-12 years now. Okay, Yeah. So I'm talking about yes 2004, 5, 6, 7 हाँ. वाला period. But yeah, so I was just And maybe it happened ahead of times. Ambala was not up to that level. हाँ, in that वो हो time. सकता है. But Yes. अभी की जैसे बात करें, तो अभी तो कैफेज आ रहे हैं. बहुत कुछ आ रहा है. हाँ, So so Gopal Sweets is here Yes, now. Gopal Sweets is here. Gopal is here in the Gopal. mall. It's a very nice outlet. And अभी हम एक Very beautiful cafe में one, बैठे yeah. थे मानव चौक के पास में. And we have done like 2 business meetings there. So that is also a good space we found कि वहाँ पे जाके अच्छा. So I think I interrupted you you need with to something आप बोल रहे you थे. need to have persistence in your thoughts. And so like when we started from Chandigarh, Panchkula, people used to tell us you should shift to Gurgaon, you should shift to Bangalore, you can't run from here, talent is an issue here. But these small cities give you a lot of time because there are less distractions. Yes. And what happens when you go from here to meet somebody in Delhi, Gurgaon, Bangalore, they give you time because you have come from here. Yes. If you're staying there Yes. and you go, they will say, oh, sorry, I got stuck. Can you come tomorrow? Can you come day after? So we got a lot of that of advantage. We used to go thrice in a week to Gurgaon, but that still worked with us because we were able to reach at 9:30 because we knew that's far. Because if you are in local, you will never be able to reach Yes. that early. And we got a lot of bandwidth from our clients. Okay, oh, he has come from Chandigarh. So Okay. we said yes. Great. Great. And another thing is work-life balance, of course, Yeah, right? Which yeah, can yeah. be much better in smaller And towns. smaller town, retention of talent. Yes. That has helped absolutely. us. So we have highest comebacks in the industry. So people have worked 6 years, left us, joined us back after 1 year, again worked for 4 years, left us, joined back after 1 month, worked 3 years again, left us, joined back after 1 day, right? And this is not one story. We have 36 to 40 such people, Okay. right? So that gives you a lot of confidence, a lot of comfort when you know your team is there for long. Because in Yes. Bangalore, they say in lunchtime, person goes and gives interview and Yes. you are not sure whether you will turn up tomorrow or not. Yes. So we have been able to retain talent because we have worked through smaller cities. We work from Panchkula, where we are headquartered. Shimla has been our registered office since 2005, and we had 350 people in Shimla. Having 350 people in Shimla meant a lot. Yes, We were biggest absolutely. corporate of Shimla in IT, and so zero attrition. Right. Just Nobody leaves you. Even if they get 10 times the salary in Gurgaon, they will not leave you because they are used to that Shimla environment. And Yes. right. So then we adopted a village nearby. Kharidwa is the name, 9 kilometers from Shahbag. So we have 80 employees there. They've been working for last 3-4 years with us, and we take care of the sanitation of that village, street lights, dispensary. We run tuition center, an innovative tuition center from there, which is basically kids teach kids. Oh. Right? Interesting. There are teachers invigilating. They will give a topic to the student that you have to prepare it and then teach the other student. So this can bring confidence in Yes. students. Yes. भैया उनको बोलना पड़ेगा. They Yes. have to prepare. Yeah. उनको सीखना पड़ेगा. So how that thought came is my both parents are teachers. Oh. Right. Okay. So they used to teach a lot, and they used to teach tuitions also at home. And sometimes what happened, they had to go somewhere, some relative or some play. So there were kids for tuition at home, and we were there. So we took that role. Right. Okay. And in 7th standard, we used to teach 10th standard students.
right? At That home. is really amazing. So that gave us a lot of confidence, right? Yes. That we can teach, we can explain. Yes, So when yes. you explain somebody, your concepts get clear. Yeah, Yes. they say, right, teaching is the best form of learning. Yes. So you learn while you teach, and of course, like public speaking and confidence building. So that helped us. So that's what we want to send it further, and we have taken this set of 90 students whom we are training on teaching. Right. So, do you want this to, I would say, expand to whole of India? जितने villages हैं? It should. That's what happens in all big colleges, right? They give you topic, go and prepare. That is what projects are. Okay, you have to prepare, you have to present. That is all about experience. So what we are lacking now is basically our kids don't have any experience when they come out of colleges. Yes. Of Because course. parents have protected them a lot, kept away from all kind of workings. No, you should focus on study. You should focus on study. Yeah. That has spoiled the culture. Because earlier kids who used to come out of college, they knew everything. Because उन्होंने घर पे दूध भी निकाला है गाय का, Yes. खेती भी की है, साथ साथ मार्केट जाके शॉपिंग भी की है ना, ट्रांसपोर्टेशन भी किया है, शादियों में भी काम किया है घर के अंदर, तो सारा एक्सपीरियंस होता था, सब पता होता था. आज के बच्चे को कुछ नहीं पता है. एक बच्चा आता है मेरे पास इंटरव्यू देने, मैं पूछता हूँ पिताजी का क्या काम है, कहता है जी चीनी का होलसेल का काम है. मैंने कहा क्या रेट चल रहा है, नहीं पापा ने मना किया है. आपने लाइफ में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना शॉप पे आके, आपने अपने पढ़ाई पे फोकस करना. Yes. क्या करेगा वो? That might be common story. बहुत कॉमन स्टोरी है, उसको बिल ही नहीं पता. मैं बता रहा था कि हमारे रिलेटिव्स हैं यहाँ पे, तो मेरे मामा लोग का शॉप है दीपक बुक डिपो के नाम से, कैंट के अंदर काफी फेमस है. तो हम लोग स्कूल के बाद अपनी उनकी शॉप पे जाते थे. तो जब हमने ये 94 में शुरू किया तो हमें सारा बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्लियर था कि हम 10-10 रुपए इकट्ठे करेंगे बच्चों से, इतने पैसे इकट्ठे होंगे, इतने सर्टिफिकेट में जाएंगे, इतने पेपर बनाने में जाएंगे, इतने बचेंगे. फिर अगला प्रोजेक्ट किया तो हम 12th क्लास में तो जाके उनकी इनकम टैक्स की तारीख तक भुगत आते थे कमिश्नर के पास बैठ के. तो हमें बिजनेस करने में कभी कोई दिक्कत ही नहीं आई. जो कि अभी मेरे पास लोग आते हैं, सर हम स्टार्टअप करना चाहते हैं. मैं कहा बहुत अच्छी बात है, करो. सर प्रॉब्लम आ रही है, बैंक में अकाउंट ही नहीं खुल रहा है. तो मेरे को मन तो करता है कि सर फिर तो आप रहने ही दो. अगर बैंक अकाउंट ही नहीं खोल पा रहे आप तो आप कैसे बिजनेस करोगे, जबकि बैंक वाले पीछे पीछे घूम रहे हैं आपके अकाउंट खोलने के लिए. बैंक तो हम मतलब 4th-5th स्टैंडर्ड से जाते थे, पैसे जमा कराने जा रहे हैं, विड्रॉ करने जा रहे हैं, सारा कुछ हम खुद बैंकिंग देखते थे. अब तो चीजें बदल चुकी हैं, अब तो आगे जाके आपके थ्रू ही बैंक खुलना है, आपके थ्रू ही सब कुछ काम होगा. हाँ, वो ही बचा लेगा नेक्स्ट जनरेशन को. अदरवाइज तो रिलेशनशिप बिल्डिंग में बहुत पूर होती जा रही है नेक्स्ट जनरेशन. यस. जो काम हम रिलेशनशिप से कर लेते थे, बैंक में गए है ना, कुछ हमारे नाना जी का नाम चलता था, मामू का नाम चलता था, कुछ हम रिलेशनशिप बना के कर लेते थे. भाई चेक साइन नहीं है तो भी हम पैसे निकाल रहे हैं, कल साइन हो जाएगा. आज की जनरेशन वो काम नहीं कर सकती. नहीं कर वो ऐप के थ्रू तो कर लेगी, बट ये जो रिलेशनशिप बनाने वाला काम है उसमें वो है, वो अवेयरनेस ज्यादा होगी. कंज्यूमर राइट्स पे बच्चे हमारे बात कर लेंगे, लड़ लेंगे, बट वो नहीं कर पाते कि कैसे किसी को रिक्वेस्ट करके काम कराना. वो बॉन्ड भी जरूरी होता है. वैसे तो इट्स टू वे कनेक्शन हमेशा, बट समटाइम्स ये है कि वो इनिशियल एफर्ट देना पड़ता है आइस ब्रेक करने के लिए. वंस यू डू दैट बाकी अपने आप हो जाएगा. बिल्कुल. तो आई थिंक व्यूअर्स को आज काफी कुछ सीखने को मिला. Hopefully, right things. Yes, definitely, sir. Instead of viewers, like viewers को तो मिलेगा ही मिलेगा, हमको पहले सीखने को मिल रहा है. So, very enlightening for us. Thank you. Okay, so here we are setting up the shoot for today's podcast. It's our ring light, that's Aayush getting a table. This is going to be the background for the podcast, green. We have one more table also with setup of 3 chairs which also can be used. See, our man
with two cameras and a light, with some wires in his hand as well. Laptop open, mic पूरा, हमारे साजो सामान के बैग्स. मैं खुद को भी तो दिखा दूँ थोड़ा. Hello, mic testing. Hello, 1 2 3. Hello, mic testing. Hello, 1 2 3. Here to record the podcast with Mr. Anuj Aggarwal, owner of City Plaza Mall in Ambala and a serial entrepreneur at the helm of multiple companies in the areas of IT, telecom, media, and logistics. Also, somebody who is very passionate about environmental causes, and he has established a great mohim called I Hate Polythene.